Hello everyone, welcome back to our lecture series of Riemann integrations. In the previous lecture we have discussed intermediate value theorem for integrals. इस लेक्चर में हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जनरलाइजेशन देखेंगे और ये शो करेंगे कि जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमने प्रूव की है दैट इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ दिस जनरलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. ओके, this is in the form of exercise and this is 33.14 exercise. So let us start this lecture by writing the statement of generalization of intermediate value theorem for integrals. Okay, so this is exercise 33.1. Okay, its first part is, and let me write that this is generalization of intermediate value theorem for integrals. The first part is prove the following generalization of the intermediate value theorem for integrals, that is if f and g are continuous functions on closed interval a comma b and g of t is greater than equals to 0 for all t in the closed interval a comma b, then there exists x in open interval a comma b such that integration from a to b of ft g of t dt is equal to fx time a to b gt dt. Okay, this is very strong statement in the theory of integration. Okay, so let us identify this one. हम इसके तीन पार्ट है इस थ्योरम के और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के तीन पार्ट है, उसमें से हम पहले इसको प्रूफ करेंगे और फिर सेकंड पार्ट पर हम चलेंगे. ओके, so you can consider this as a statement of generalization of intermediate value theorem and now I am writing the proof of this. So you know, जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ लर्निंग. ओके, अब यहाँ पर हमें गिवन है दैट एफ एंड जी आर continuous function. Okay, and this is on closed interval a comma b. If z of t is greater than equals to 0, that is this is a non-negative function on this closed interval a comma b. अब जब कोई भी हमारे पास कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन गिवन है तो या फिर हमारे पास इन जनरल कोई नॉन नेगेटिव थिंग अगर गिवन है तो उससे हम क्या यूज़ ले सकते हैं. जैसे मान लो आपको किसी केस में गिवन है दैट एल्फा इज़ पॉजिटिव, तो इस तरीके के कंडीशन का या फिर इस तरीके के क्वांटिटी का हम कहाँ पर यूज़ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई इनइक्वलिटी है, सपोज हमारे पास है a इज़ लेस देन b, ऐसा कुछ है, तो जब हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, दैट इज़ a अल्फ़ा टाइम a इज़ लेस देन अल्फ़ा टाइम b. इसका मतलब अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिलेशन प्रीवियसली इन क्वांटिटीज़ के बीच में है अल्फा ए और बी के बीच में, वो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होने के बाद भी रहेगा. ओके, दिस इज़ द वन यूज़ ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी
अब क्योंकि यहाँ पर जी टी हमें नॉन नेगेटिव गिवन है, तो इस तरीके का एक यूज़ हम जी टी का लेंगे। ओके, अब इस तरीके की इनइक्वलिटी हमें कहाँ मिलेगी? ए इज़ लेस देन बी। तो क्योंकि हमें गिवन है कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। जब एफ कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर, इसका मतलब ये फंक्शन एफ बाउंडेड है, और उस केस में इसके सुप्रीमम और इन्फीमम हमें इसी ए बी इंटरवल के किसी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, नाउ वी विल यूज द continuity of f and g and then will obtain an inequality, और उस inequality के लिए हम g t का नॉन नेगेटिव होना यूज करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। Let f and g are continuous on close interval a comma b। ठीक है, then f attains its infimum and supremum इन ए कोमा बी। राइट, कहने का मतलब क्या है? ए कोमा बी में ही दो हमें मेंबर मिल जाएंगे, जिस पर एक पर फंक्शन का इन्फीमम मिलेगा और एक पर हमें सुप्रीमम मिलेगा। लेट अस कॉल द इन्फीमम, दिस इन्फीमम इज स्मॉल m एंड द सुप्रीमम इज कैपिटल M। ओके, जब f के लिए हम इसे सुप्रीमम और इन्फीमम कह रहे हैं, देन दिस विच implies that m is less than equals to f of t less than equals to m for all t belongs to closed interval a comma b। राइट, हमेशा अगर ये इन्फीमम है और ये सुप्रीमम है तो एफ टी की वैल्यू हमेशा इनके बीच में ही रहेगी। लेट मी कॉल दिस इज नंबर 1। ओके, इनइक्वालिटी नंबर 1। नाउ z of t is greater than equals to 0 for all t belongs to the closed interval a comma b, then from 1, if we multiply this non-negative quantity to this, then we will have m times gt is less than equals to ft gt less than equals to m time zt। राइट, अब हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी जहाँ पर हमने कहा था कि जो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, जो रिलेशन दो फंक्शंस के बीच में होता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उनके इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सेम रिलेशन उनके इंटीग्रल्स के बीच में भी होगा। तो अगर सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शन को कंसिडर करें, तो हम ये कहेंगे दिस फंक्शन इज लेस एंड इक्वल्स टू दिस फंक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। तो यही रिलेशन इनके इंटीग्रेशन में भी होगा। इसका मतलब द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी less than equals to integration of this। Okay, so the same statement can be given for these two functions also, so we can say this will implies that integration from a to b m time gt will be less than equals to integration from a to b of ft gt less than equals to integration from a to b uppercase m time gt। okay, now we know supremum और infimum एक particular interval में यूनिक ही होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा this will implies that m time a to b of gt less than equals to integration from a to b of ft gt less than equals to कैपिटल M A to B जी टी। राइट, अब हम बात कर रहे हैं इसके इंटीग्रेशन के बारे में। ओके, हमें गिवन है कि फंक्शन हमारा नॉन नेगेटिव है और ये कॉन्टिन्यूस है। अब जहाँ पर नॉन नेगेटिवनेस और कॉन्टिन्यूटी था, तो इंटीग्रल से हम ज़ीरो की तरफ जा सकते थे, ऐसा हमने एक स्टेटमेंट में प्रूफ किया था। ओके, नाउ यू नो दैट जी इज कॉन्टिन्यूस एंड z of t is greater than equals to 0 for all t belongs to a comma b। okay, then
if integration from a to b of zt say dt is equal to 0, then this will implies that this g of t is equal to 0. ओके, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट था जो हमने प्रूफ किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस नॉन नेगेटिव होने के केस को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लेट अस आइडेंटिफाई टू केसेस। केस 1, if zt integration of a to b zt is equal to dt is equal to 0. Okay, let us write here also dt, क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल लिख ही रहे हैं तो हमें यहाँ पे dt लिखना चाहिए। dt अगर हम वेरिएबल नहीं लिखते हैं फंक्शन के लिए तो dt लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। dt dt ओके। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें जहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो है, तो अगर इंटीग्रेशन जीरो है इस वाले इक्वेशन से, लेट मी कॉल दिस इज स्टेटमेंट नंबर S1. ओके, so this is statement 1. Then from statement S1 we have that zt is equal to 0 for all t belongs to a comma b, and in this case 1 holds trivially. ओके, क्योंकि अगर gt 0 ही है तो उस केस में हमारे लिए प्रूफ करने जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर भी ये 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा, और दैट विल बी अ वेरी ट्रिवियल केस। ओके,